So our next topic is what? Area of triangle. Using coordinate geometry, we can find the area of triangle. Now see, this is the figure. This is a triangle PQR. The coordinates of point P are what? X1, Y1. Point Q are what? X2, Y2. Point R are what? X3, Y3. ओके, तो अभी ये ट्राइंगल का मुझे एरिया निकालना है. So now for finding the area of this triangle, we will require area of trapeziums. Okay, so first we will find the areas of trapeziums. Tell me which are the trapeziums here in this figure, in this complete figure, which are the trapeziums. Trapezium is a figure which has four sides. Okay, in which two sides are parallel to each other. So tell me which are the four trapezium: PQAB, QACR, okay, and one more, PRCB. Okay, correct. तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है, इट इज नथिंग बट 1/2 into sum of parallel sides into distance between the sides, या फिर उसको हम लोग हाइट भी बोल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द साइड्स को. सो ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर निकालेंगे यहाँ पे. अब मुझे ये ट्राइंगल का एरिया निकालना है. सो व्हाट आई विल डू, फर्स्ट चेक दिस ट्रेपेजियम. हाँ, ए बी, ए बी पी क्यू. ओके, ए बी पी क्यू ट्रेपेजियम, दिस ट्रेपेजियम. We'll apply the formula of area of trapezium to this trapezium. ओके, उसके बाद नेक्स्ट ट्रेपेजियम है, देखो, पी आर सी बी. ओके, दिस ट्रेपेजियम. अब ये दोनों ट्रेपेजियम को जोड़ के, अगर मैं तीसरा ट्रेपेजियम, जो अभी मैं दूसरे कलर से ड्रॉ करता हूं यहाँ पे, अगर मैं तीसरा ट्रेपेजियम, ये वाला ट्रेपेजियम, अगर मैं सब्सट्रैक्ट करता हूँ ये दोनों ट्रेपेजियम के एरिया में से, सो व्हाट आई विल गेट, व्हाट आई विल गेट, आई विल गेट एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर. ओके, तो पी बी ए क्यू, ये वाला ट्रेपेजियम, पी आर सी बी, ये वाला ट्रेपेजियम, ये दोनों को ऐड करना है. उसमें से एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्यू आर सी ए ये सब्सट्रैक्ट करना है. आपको क्या मिलेगा? You will get the area of triangle PQR. Okay, so we will follow. Now we will write it stepwise. First, we will get the area of trapezium PBAQ. Now see, what will be the area of trapezium PBAQ? It will be 1/2 into QA plus PB. QA plus PB क्या है? These are nothing but the parallel sides. So sum of parallel sides multiplied by height is what? AB. Okay, now you can check the figure. QA, QA जो distance है, ये कितना distance है? ये Y2 वाला distance है. Okay, QA जो distance है, it is nothing but Y2. From year to year, the distance is what? It is Y2. Okay. PB.
P से लेके B तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कौन सा है? दिस इज नथिंग बट योर डिस्टेंस y1. ओके, दिस इज नथिंग बट योर डिस्टेंस y1. उसके बाद मुझे ए बी डिस्टेंस चाहिए. सी द फिगर. आई वॉन्ट दिस ए बी डिस्टेंस. सो हाउ आई कैन गेट? अगर मैं ओ बी डिस्टेंस में से ओ ए डिस्टेंस को मैं अगर सब्सट्रैक्ट कर दूं तो मुझे ए बी डिस्टेंस मिलेगा. व्हाट हैपेंड सारंग? Afterwards I will share you the PDF file. Okay, let me complete it first. तो मुझे ए बी डिस्टेंस चाहिए. हाउ आई कैन गेट द ए बी डिस्टेंस? इफ आई सब्सट्रैक्ट ओ बी माइनस ओ ए. ओ बी में से अगर मैं ओ ए को सब्सट्रैक्ट करता हूं तो मुझे ए बी डिस्टेंस मिलेगा. तो ओ बी डिस्टेंस कितना है? फिगर में से देख के बोलो मुझे, ओ बी डिस्टेंस कितना है? इट इज नथिंग बट x1. ओके, और ओ ए डिस्टेंस कितना है? इट इज नथिंग बट x2. सो मुझे अगर ए बी डिस्टेंस चाहिए तो व्हाट आई विल डू? x1 minus x2. सी इट इज रिटन हियर. AB is what? It is nothing but OB minus OA, and OB is what? X1. OA is what? X2. So X1 minus X2. Is it clear to you? Now just I have put the values in this formula, area of trapezium PQAB. So this is what? This is sum of parallel sides, and this is what? This is height AB. Okay. Is it clear to you? Till here, any doubt? Is it clear to you? Okay. तो जैसे मैंने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पी क्यू ए बी निकाला है, वैसे ही हम लोग दूसरे ट्रेपेजियम का भी एरिया निकालेंगे. पी बी सी आर. अगेन द सेम फॉर्मूला, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट. तो अभी मुझे फिगर देख के बोलो, व्हाट इज डिस्टेंस पीबी? पीबी डिस्टेंस कितना है? पीबी डिस्टेंस y1 है, देखो यहाँ पे y1. ओके. सी आर डिस्टेंस कितना है? सी से लेके आर तक का डिस्टेंस ये y3 है. ओके. और बीसी डिस्टेंस, अब मुझे बीसी डिस्टेंस चाहिए तो मैं क्या करूंगा? ओसी, यहां से लेके सी तक का डिस्टेंस निकालूंगा, उसमें से मैं ओबी डिस्टेंस सब्सट्रैक्ट कर दूंगा. ओबी हमारे पास ऑलरेडी है, देखो x1. ओ से लेके सी तक का डिस्टेंस है x3. ओके. तो x3 माइनस x1, यू कैन चेक इट हियर. So just put the values in the formula. What we will get? 1/2 into this is sum of parallel sides and this is into height, that is BC. ओके. तो अभी दोनों ट्रेपेजियम का एरिया हो गया. अभी ये वाला ट्रेपेजियम का एरिया निकालना पड़ेगा जो हमको सब्सट्रैक्ट करना है. ओके. दिस ट्रेपेजियम area we will find now, and we will subtract this area from the sum of these two areas. Okay. So now the third trapezium area is what? QACR. QACR ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है. तो यहाँ पे QA डिस्टेंस, व्हाट इज QA डिस्टेंस? इट इज इक्वल टू y2. You can check in the figure also. CR distance, it is equal to y3. And AC, now we want AC distance. So AC is what? It is nothing but OC minus OA. तो OC तक का डिस्टेंस है x3, OA तक का डिस्टेंस है x2. तो x3 minus x2. Okay, just put the values in the formula, you will get like this. Okay. Now in order to get the area of triangle PQR, what we will do? We will add these two areas. Okay, these two areas we will add, and from that we will subtract this area. Okay, third trapezium area we will subtract. So what it will come? Area of triangle PQR will be equal to 1/2 into, in bracket, x1. Now this is a rearranged form. हाँ, एक्चुअली आपको ऐसा नहीं मिलेगा, आपको वो रीअरेंज करने के बाद ऐसा मिलेगा. ओके. सो डायरेक्टली दे हैव रिटन इट लाइक दिस. सो अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये दोनों को आप ऐड कर दो. ओके.
you add these two and subtract this one. Okay, so what you do, you multiply the terms, first term with first term, first term with second term, second with term with first term, again second term with second term. कुछ terms यहाँ पे cancel होने वाली हैं. Sir, in third step, instead of QACR, it's written area of trapezium PBCR. Where in third step? QACR is correct, na? Yes, Ravani? Ah, Sir, here. in that area. Ah, okay. Okay. By mistake, it might be. Okay, but here in the heading, it is mentioned clearly. Okay. Here also. No, here it is correct. Okay. So, आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय सेकंड टर्म, सेकंड टर्म मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म मल्टीप्लाइड बाय सेकंड टर्म. यहाँ पे भी वैसा ही करना है, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय सेकंड टर्म, सेकंड टर्म मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म मल्टीप्लाइड बाय सेकंड टर्म. हियर आल्सो यू विल डू द सेम थिंग. ओके, हाफ आप लोग कॉमन निकाल लोगे, उसके बाद ये सारे प्रोडक्ट करके रखोगे. ओके, और ये प्रोडक्ट करने के बाद कुछ टर्म्स कैंसिल होने वाले हैं, और जब बचेगा उसमें से हम लोग फिर, अब सपोज मेरे पास क्या बचेगा, x1 y2 माइनस x1 y3, ये बचेगा, तो मैं x1 कॉमन ले लूंगा और ब्रैकेट में लिख दूंगा y2 माइनस y3. सिमिलरली नेक्स्ट क्या बचेगा, x2 y3 माइनस x2 y1, तो मैं क्या करूंगा, x2 को कॉमन ले लूंगा, y3 माइनस y1. इस तरीके से ये फॉर्मूला को रीअरेंज किया है. ओके, डायरेक्टली नहीं आता है ये स्टेप. You do the product, some terms will get cancelled, and after that, uh, you, after taking common x1 x2 x3, जहां भी कॉमन निकल रहा है वहां से कॉमन लेके आपको इस तरीके का मिलेगा. Okay, is it clear to you now? This derivation is not required to you. Okay, you should only know the formula. ये किस तरीके से आया है ये नहीं पूछेगा कोई. You should only know the formula. So what is the logic to remember the formula? Yes, can anyone tell me by looking at the formula how we can remember this? What logic we can keep in our mind? Yes, anyone? Or should I tell it? First of all, tell me, did you understand how the formula came? यहाँ फिगर को समझने की कोशिश कीजिए. ओके, फिगर को समझने की कोशिश कीजिए, फिगर पे से ही वो आपको ध्यान में रहेगा. ओके, 1 2 3 sequence, 1 2 3 sequence, 3 2 1 2 3 1. Okay, I will tell you the hint how to remember this. First of all, the formula is area of triangle. Okay, जो भी triangle का नाम है वो आप यहाँ bracket में लिख दोगे, 1/2. Okay, in bracket x in bracket like this plus x in bracket like this plus x in bracket like this and bracket close. Okay, so now make like this terms here. Okay, from 1 you will move towards 2, from 2 you will move towards 3, and from 3 you will move towards 1. Okay, now if you are taking x1, okay, if you are taking x1, so after x1 you should write y2. Okay, in bracket के अंदर हर जगह y आएगा. Inside bracket there will be y, and outside bracket there will be x. Okay, this you have to keep in mind. So next, after 1, what it will come, y2 minus y3. Now if you are taking x2 here, so 2 हो गया 3, so y3 minus y1. Okay, if you are taking x3 here, so y1 minus y2. Is it clear to you? Inside bracket there will always come y, outside bracket there will always come x. Okay,
make this like this type of diagram. Okay, if you're writing 1 outside the bracket, then inside the bracket what it should come 2 minus 3. Okay, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा. If you're writing 2, so inside bracket it should come 3 minus 1. So y3 minus 1. If you're writing outside bracket 3, so it should come 1 minus 2. You have to move in this direction only, always. Which direction it is, clockwise or anti-clockwise? Anti-clockwise. Okay, in anti-clockwise direction you will move. Is it clear to you? तो चलो फिर पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. Okay, one before starting the exercise, one practice question we will do. Okay, I will display that. Just give me 2 minutes. Okay, this is GeoGebra software. Huh? We can do various mathematical things using this software. Okay, first of all, we will see how the construction took place here. Okay. If you want, you can see the 3D version also. Okay, first we will see the 2D version, then we will see the 3D version. See, first I took point A, then point B, then point C. Okay, to form a triangle. Then I took the distance of this vertex A. Means in short, what I have done, I have drawn the perpendicular from all the vertex on x-axis. Okay. Now tell me, here point A, what are the coordinates? 10, 12. 10, 12, correct. 10, 12. Point B, what are the coordinates? 6, 8. 6, 8. Point C? 14, 4. 14, 4. Now, can we get the area of this triangle? Okay, so I will give you 2 minutes. First, you find out the area, then I will also find out the answer, and then we will verify your answer. Okay. Find out the area of this triangle. We are having the formula. If you want, I can write it for you here on the screen. So area of triangle, this is triangle ABC, will be equal to 1/2 into x1 अगर आएगा तो ब्रैकेट के अंदर आएगा y2 minus y3 प्लस x2 अगर आएगा तो y3 minus y1 और x3 अगर आएगा ब्रैकेट के बाहर तो अंदर आएगा y1 minus y2. This is the formula. Yes, tell me the area of this triangle. What will be the area of this triangle? Twenty-four square units.
Harsh Chaudhary is telling that it will come 24. What about others? Find out the answer. Yes, Harsh, your answer is correct. 24 square units. See here, with the help of this software, we get ready-made everything. Okay, see this is the area. These are the coordinates of point A, point B, point C. Okay, अभी ये A B C क्या है? आप बोलोगे ये A B C क्या है? तो ये A है, देखो, small a, which represents the distance of this AB segment. The B से C यानी ये B है और ये small c है. ओके, तो ये small b क्या होता है? It is nothing but the distance between segment BC. Okay, and AC is what? It is represented by small c. So the distance between this distance of this AC segment is what? C. So you can check the values here. Here everything comes ready-made. Okay. Point Q's coordinates also you can see it here. Point P's coordinates also are there. Point R coordinates are also there. And F, G, H, these are nothing but the distance of this segment. This is F, this is G, and this is H. Okay. So very, very nice software it is. You can see the 3D view also. I will show you the 3D view also. See, you can see from any angle. No, no, it doesn't work on mobile. It requires PC only. Means mobile version is also there, but I have not used that mobile version. And means I don't think so. All the functions will be given in the mobile application. Okay. It's a free software. Okay. Yes, in laptop you can use it. Now see, 3D construction protocol also we can see. See, I will play it here. See, this is point A, point B, point C. This is the construction of the triangle. GeoGebra. The name of the software is GeoGebra. I will teach you. We are going to do practicals on this software only in our computer lab when you will come to school. Okay, then we will move to our exercise. Okay, see the first question of the exercise. Find the area of the triangle whose vertices are given to us. Okay, so we will draw one triangle first. This is vertex A, this is vertex B, this is vertex C. वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट है 2,3, वर्टेक्स बी का कोऑर्डिनेट है -1,0, वर्टेक्स सी का कोऑर्डिनेट है 2,-4. सो व्हाट इज द फॉर्मूला? यस, हु कैन टेल मी द फॉर्मूला? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. चलो, हु विल टेल मी द फॉर्मूला?
Who will tell me the formula? Yes, Gauri. Yes, sir. बोलो. Area of triangle ABC is equal to Hmm. half in bracket Hmm. x1 in Hmm. bracket y2 minus y3 Okay, correct. plus x2 Hmm. in bracket y3 minus y1 Okay, plus x3 in bracket y1 minus y2. that's it. Just put the values and tell me the answer. So 1 by 2, what is x1? It is 2 in bracket y2. y2 क्या होगा? 0 minus y3 क्या होगा? -4. तो ये +4 हो जाएगा. x2 क्या है? -1. Okay, so here this will become -1 in bracket. y3 क्या है? -4 -3. x3 क्या है? It is 2 in bracket. y1 क्या है? It is 3 and y2 is what? 0. So 3. Okay. Is everything correct? I have put the values correctly. Please check it. So 0 plus 4 is what? 4. 4 2 is what? 8. Here this will become -7. This will become +7. Okay. And plus 6. So 14 plus 7 is what? 21 divided by 2. 21 divided by 2 square units. This will be the answer. सबसे इजी एक्सरसाइज है ये, बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए. In last bracket it should be minus. Okay. वो 0 plus हो या minus हो, it's one and the same. But as per the formula, it should be minus only. Correct. So 21 upon 2 square units. Okay, try the second one. Find out the value of this second one. 32 square units. प्रेरणा जाधव ऑलरेडी सब कुछ फाइंड करके रखा है क्या आपने? So the answer for this one is what? It is 32 square units. Same formula you will apply. Okay. Same formula you will apply. I'm sending you the attendance link. Please mark your attendance. So for this second one, first you will draw the figure. Okay. This is triangle ABC. वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट है -5, -1. वर्टेक्स बी का कोऑर्डिनेट है 3, -5. वर्टेक्स सी का कोऑर्डिनेट है 5, 2. Okay. So what is the formula? Area of triangle ABC, it is equal to 1/2 in bracket x1 bracket y2 minus y3
plus x2 in bracket y3 minus y1 plus x3 in bracket y1 minus y2. Just put the values. x1 is what? It is minus 5 in bracket y2. It is minus 5. y3 क्या है? 2 है तो minus 2 हो जाएगा ये. उसके बाद x2 क्या है? It is 3. y3 क्या है? It is 2. y1 क्या है? -1 तो ये +1 हो जाएगा. प्लस x3 क्या है? It is 5 और y1 -5 and y2 is sorry -1. y1 is -1 and y2 is -5. Is everything correct? I have put the values correctly. Please check it. तो ये हो जाएगा -7 और मल्टीप्लाइड बाय -5 तो ये हो जाएगा 35. यहाँ पे ये हो जाएगा 3 3 are 9 and here -1 plus 5 is 4. 5 4s are 20. Have I put the values correctly? Everything is correct. Please check it. 35 plus 20 55. 55 plus 10 65 minus 1 64 upon 2 that is equal to 32 square units. Okay. Please mark your attendance. Okay, next one. If you can try, you can, it means if you are able to do it, you will try it. Otherwise, I will take it tomorrow. In each of the following, find the value of k. Attendance link already भेज दिया है आयशा. For which the points are collinear. Just tell me when the points are collinear. When the points are collinear. When the points, all points when they lie in the on the same line, that time the points are collinear. Okay. तो यहाँ पे हमको क्या बोला है? हमको k का वैल्यू फाइंड करना है. तो थोड़ी देर के लिए हम लोग इसको क्या कंसिडर कर लेंगे कि ये कोलिनियर है. ओके. सो कोलिनियर यानी एक लाइन पे ही है. दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी. तो यहाँ पे 7, -2, 5, 1 and 3, k. So how we can get the value of k? Yes. How we can get the value of k? How we can get the value of k? AB plus BC is equal to AC. Correct. हम लोगों ने 7.1 एक्सरसाइज में भी यही किया था. Distance AB plus distance BC, it should be equal to distance AC, distance formula. Okay, so if you can solve it, try to solve it. Otherwise, I will take it tomorrow. Don't worry. Tomorrow not. Tomorrow is test. Day after tomorrow.